Good evening and welcome. A very happy Navami to all of you, and welcome to the Wednesday session. And before we start, the agenda for today is law of karma, law of cause and effect. And this is the third spiritual law that we're going to discuss. But let us first look at the insights that we have got from the first two spiritual laws, law of pure potentiality and the law of giving. So a quick recap. Anybody who wants to do a quick recap? Session 1. We did a recap of all the spiritual laws, and with session 2, we saw that law of pure potentiality, which is also called the law of being. So we are all human beings. So we have a being domain. And when we are transforming our being domain with powerful affirmations, and that affirmations are in the line of I am. And the most powerful affirmation could be I am divine. How many of you can believe this and actually say that as an affirmation? I am divine. Like we have in the Mahavakya of Vedanta, Aham Brahmasmi. So I am divine. Like that. And it should be as powerful and as confidently said as you say your name. Like I am Shashi Dhar, I am divine. Like that. It should have the same kind of tone and confidence within you. That is the belief. Yes? And if you're not saying that, then at least you should be saying, I am peaceful, I am powerful, I am strong, I am healthy, I am wealthy. Yes, I am grateful, I am forgiving. Whatever you want to create, you create that because that is the foundation. The being part is the foundation. So that is the law of pure potentiality. We are infinite, but from the infinite, we are manifesting some divine qualities or some powerful qualities in us by manifesting it as an affirmation. Everybody clear on that? So that was the first law, law of being, law of pure potentiality. Then we looked at if you want to create any results in your life, then we saw the first law is law of giving. And we saw in the last session various things that we can give, how we can give and contribute. Giving means actually contributing to the humanity. So how I can contribute to myself, how I can contribute to people in my life, that is actually the law of giving and receiving. Yes. And what is the best thing that you can give to somebody? We did the last session. So recap of that will be what will be the best thing, or rather, what do you think is the best thing that you can give to somebody else? Empowerment. Like what? How do you Like you empower make the somebody? person capable. You make the person capable of something. Okay, good. So you make a person capable. Let us build on that. तो अगर किसी को रोटी चाहिए तो मैं उसको रोटी दे दूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसको ये सिखाऊं कि रोटी कैसे कमानी है. So there is, I am teaching them the skill, or I am teaching them the ability to earn a livelihood. Correct? So if I give a fish, it will serve for 1 day or 2 days. If I teach them fishing, then it is a lifelong skill for them. Correct? So we can teach them knowledge, we can teach them skill. That is perfect. Very good. Anything else better than that? How can you contribute anything better than that? Think. किसी को रोटी देते हो, किसी को कपड़ा देते हो, किसी को पैसा देते हो, 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, खाना खाएगा, 6 घंटे बाद दोबारा भूख लगेगी. कपड़े दोगे शायद 1 महीना चल जाएगा, चलो 6 महीने चल जाएंगे, उसके बाद दूसरा कपड़ा लगेगा. करेक्ट? आपने किसी को जीविका जीने की एक स्किल दे दी तो क्या होगा? शायद 10-20 साल उसको काम आ जाएगा, अपनी सर्वाइवल वो देख लेगा, अपनी लाइवलीहुड वो चला लेगा. So that could be something. So that what Binaji is saying is, if we give them knowledge, if we give them skills, so they can earn their livelihood. How else can you contribute? Transformation, I think, can be forever, eternal. कैसे करोगे? कैसे? I think the answer lies. हाँ अमित जी क्या बोल रहे हैं? I think the answer lies in wisdom, spirituality, or Gyan. Even Gita says Gyan Dan is the highest. Absolutely perfect. Yeah. If you are giving some knowledge, some wisdom,
in the worldly matters, you are only impacting him in that lifetime. If you put somebody on the spiritual journey, if you are sharing your spiritual wisdom, if you are sharing your spiritual wisdom, lighting up the spark of divinity within somebody, you are serving him for lifetimes. किसी को स्पिरिचुअल ज्ञान देना सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है, सबसे बड़ा दान. Correct? So putting somebody on the spiritual journey is the highest kind of contribution you can do to any human being. Correct? That I'm talking to is the human being. Meanwhile, you can keep doing whatever you want to do for other living beings. You want to save the nature, you want to save the pets, you want to do whatever you want to do for the other species, go ahead and do that, no problem. But the highest level of contribution is to human beings. Yes. And how do you serve the human beings? By putting them on the spiritual journey. And you may have limitations in that. So what you can do? How do you spread the light? How do you spread the light? पहले तो अपना दीपक स्वयं बनो. You have to light up yourself. And then when you share that wisdom to people, you will be able to spread that light to others, and they will be able to awaken themselves, or at least start moving on the spiritual journey towards some higher purpose of life, soul purpose. Correct? So I hope everybody is clear on this. Now let us look at how can you contribute to somebody in the spiritual domain. क्या कर सकते हो आप? सबसे पहले तो आप देखो आप क्या कर रहे हो अपनी spiritual journey के लिए. And if somebody is suffering in life, somebody is frustrated in life, what you can do? You can give some gyan. You can share that spiritual wisdom with them, or you can invite them to a place where you got the spiritual wisdom. Yes or no? That is easy. किसी को spiritual ज्ञान देना मुश्किल है, लेकिन उसको ऐसी जगह पे लाना जहाँ पे उसे spiritual ज्ञान मिल जाए, वो ज़्यादा आसान है. Correct? And how obviously we have been doing that. Many of us have been sharing this light of divine wisdom to people in our life. Yes, Amit ji is a big spokesman for that. Most of the people he has invited, and he keeps inviting people so that people can get that spiritual spark in them ignited. Correct? And here also, I think Amit ji has invited many people who are here. Yes. So how are we contributing to people? Can we invite them to your spiritual journey? Are you committed for your spiritual journey? And how can you bring people into the wisdom that you can share with them? Your spiritual journey, if you share with them, आप उनके साथ शेयर करेंगे, उनको ज्ञान मिलेगा और उनकी जर्नी में फर्क आएगा. आएगा या नहीं आएगा? How many of you are confident? And how many of you are committed now that you're going to do this from this moment onwards? Now, that doesn't mean you bring them to the Wednesday session. You may. That is one thing. But you can bring them anywhere you feel like. जहाँ पे आप जाते हैं, आप वहाँ पे उनको invite करिए. आप 5 लोगों को बुलाइए और उनके साथ फिल्मों की बातें करने की जगह, या क्रिकेट मैच की जगह, या पॉलिटिक्स की जगह स्पिरिचुअल ज्ञान की बात करिए, सत्संग करिए. और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको वेडनेसडे सेशन में बुला लीजिए. दिस सेशन इज ओपन. दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 5 years. People come and attend these sessions, get their spiritual path clear, and then they move on. Correct? So you can do that. But do something to spread the light. Because the more you spread the light, the more light you will receive. Yes? So that is the law of giving in the highest level. Now, having said that, we move on to the third level, third spiritual law, law of karma. Let us understand law of karma in the simple words. सबको मालूम है ये cause and effect, right? तो कौन बताना चाहेंगे simple words में law of karma as per your understanding? Then I will go into the depth of it, but the basic understanding should be clear to all of you, and I'm sure all of you must be knowing it. Welcome Simi ji, and welcome Tarun ji. Yeah. Yes, Leslie, go ahead. The most simplest of words is what you sow, so shall you reap. Absolutely fine. What you sow, accordingly you will reap. Perfect. जैसे बीज बोगे वैसे ही फल मिलेगा, वैसे ही पेड़ बनेगा, वैसे ही फल मिलेगा. Everybody clear on that? That is law of karma. Okay. Anything else? What goes round comes round.
जो आप करोगे औरों के साथ वो घूम फिर के आपके पास आएगा, बल्कि 10 गुना ज़्यादा आएगा, कभी 100 गुना ज़्यादा भी आता है. Yes, so that is the law of karma explained in simple words. So first let us look into the definition of what is karma. मैं जो कर रहा हूँ वही कर्म है या कर्म में कुछ और भी है? Anybody? जो कर्म सोच रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, विजय जी बोलिए. कुछ सोच रहा हूँ वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा कर्मा में. Absolutely right. So when we talk of karma, we are not talking of only doing. We are talking of whatever I am thinking, whatever I am saying, and whatever I am doing. Everything is karma. तो मेरे कर्म क्या हैं? मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे शब्द and मेरे deeds. The thought, words and actions all form part of the karma. कई वो बोलते हैं मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? कुछ सीकर्स का ये क्वेश्चन होता है. आपने कुछ बुरा किया नहीं, लेकिन सोचने में आपने क्या क्या किया? अगर आपकी सारी सोच टेलीकास्ट हो जाए, आपके सिर के ऊपर एक मॉनिटर लग जाए एंड एवरी थॉट इज प्रोजेक्टेड लाइक ए रनिंग न्यूज ब्रेक थ्रू, आता है ना लेटेस्ट न्यूज, आपके थॉट सारे अगर टेलीकास्ट होने लग जाए, हाउ मेनी रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ वुड एक्चुअली वर्क? थिंक अबाउट इट. अगर आपकी सारी सोच टेलीकास्ट होने लग जाए सब लोगों को, दैट मीन्स यू कैन नॉट थिंक anything which other person cannot read, or you can say telepathy. दूसरे के साथ टेलीपैथी, और जो आप सोच रहे हो दूसरा पर टेलीकास्ट ज्यादा अच्छा है ना. सारे थॉट्स टेलीकास्ट हो जाएं, I think 99%, I can guarantee that 99% of the population will have all the relationship destroyed in one day. sir telecast होते हैं, only the great masters like you can read what is happening वो छोड़ दो or ना, मैं what is going. 100% population की बात करूँ. 99% of the people, if their thoughts are telecast, I don't think any of their relationship will work for more than one day. It will collapse. The whole system will collapse. सिर्फ 1% लोग हैं ऐसे जिनका thoughts, words and deeds are aligned. Not even 1%. For you can say discussion sake, I am taking 1% so that you don't feel dejected. So अगर मेरी सोच, my thoughts, my words and my actions are aligned, and I can proudly claim that, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ, then I have tremendous power in manifesting whatever I want in this universe. Correct? But मैं सोच कुछ रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ, और कर कुछ बिल्कुल ही opposite रहा हूँ, then there is no power in my karma. तो मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका रिजल्ट कैसा आएगा? Passive. I don't even know what I'm creating. मैं सोच कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, कर कुछ रहा हूँ. Everybody understands? That is why our desires don't get manifested. When we say मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इतना चाहता हूँ रिजल्ट्स के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं. क्यों नहीं आ रहे हैं? Your thoughts, words and actions are not aligned. Your karma is absolutely ineffective in producing results. And when I say you, I mean we. We are all included, right? So don't look at it as I or you or someone else. तो हमको औरों की लाइफ नहीं देखनी है, अपनी लाइफ देखनी है. इसलिए मैं कभी आई या यू कहूंगा, बट व्हाट आई मीन इज वी. हाउ आर वी लिविंग इन आवर लाइफ? अगर आपके सारे थॉट्स टेलीकास्ट हो जाएं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिव दैट लाइफ? होते हैं, नहीं होते हैं, अलग चीज है, बट हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू लिव दैट लाइफ हियर? ओके, आई एम ओके इफ ऑल माय थॉट्स आर टेलीकास्टेड लाइव. कितने लोग हैं ऐसे? So we have to understand the quality of our karma is pathetic. We understand that our quality of karma is absolutely pathetic. हम जो सोच रहे हैं वो हम बोल नहीं सकते, और बोलते बहुत कुछ है. अगर वो करने लगे तब तो बात बात में मर्डर कर देंगे. कितने लोगों को बोलते हैं मैं तेरा खून कर दूंगा. Nothing happens after that, but then we say that, right?
तो अपनी सोच में और अपने वर्ड्स में हमने कितने मर्डर कर दिए हैं, कितने ऐसे कर्म कर दिए हैं जिसका हम कोई हिसाब नहीं रखते। फिर हम कहते हैं मैंने तो आज से किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। वेक अप, वी शुड वेक अप, राइट? Our quality of karma is absolutely pathetic, and that is why we are living a miserable life. But I don't want to disappoint you all, but it is just a matter of awareness. Once you are aware of it, you can definitely improve the quality of your karma. Yes? So let us look at the quality of our karma. As per the quality of karma, our karmas are categorized into 3 qualities. Every action that you can do in this universe, every thought, every speech, every action that you can do in this universe are of 3 qualities. Who wants to make the bold answer? कितने लोगों को मालूम है ये आंसर क्या है? 3 क्वालिटीज कौन सी हैं? यस अमित जी, यस उसका विजय जी, यस. So now people know, everybody else. I mean, Tamasic, Sattvic, and Rajasic. That's what? Absolutely perfect. So we are talking of Tamasic, Rajasic and Sattvic. So the whole universe, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है वो माया के अंडर है. एंड माया का मतलब क्या है? मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का मतलब क्या है? देयर इज ओनली 3 क्वालिटीज ऑफ कर्मा यू कैन डू. इट इज जस्ट लाइक यू आर प्लेइंग ए वीडियो गेम. आप वीडियो गेम खेल रहे हो और उस वीडियो गेम में जो कुछ आप एक्शंस कर रहे हो दे आर ऑल प्रोग्राम्ड, राइट? आप बोलते हो मैं लेफ्ट जा सकता हूँ, राइट जा सकता हूँ, जंप मार सकता हूँ, शूट कर सकता हूँ, यू आर प्लेइंग ए गेम, राइट? बट वो सारे एक्शंस ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हैं. So though there is a concept of free will in that game, actually you are only working within that matrix. Yes or no? In a video game. Clear everybody? So this universe also is a matrix. आप जो भी कर्म कर रहे हो वो इन 3 क्वालिटीज के अंदर ही आएगा, इसके बाहर जा ही नहीं सकता कुछ. या तो आप तामसिक कर्म करोगे, या राजसिक करोगे, या सात्विक करोगे. There is no other option as long as you are in this body and mind, in this universe. Yes? So let us look into the 3 qualities first. How many of you are absolutely clear about what is तामसिक, राजसिक and सात्विक? क्वालिटीज में फर्क क्या है? नहीं है तो बताओ, we will discuss. अगर है तो just share so that I know your understanding. How many of you know? Let's start with तामसिक. I can attempt. Yeah, Can I Veena attempt? ji, go ahead. So Tamasic is there are almost like 80% of the people, mostly people who are hand to mouth, like they are, or they are working and then they are, so if they are in a survival mode. जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना दिन जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, काम कर रहे हैं. So they are in a survival, mostly like a survival mode. Okay. Rajasic is people who have excelled the physical world. So they are like leading, they are in higher positions, they are leading the 3D world. अच्छे levels पे हैं, but not so much harmonized, but they are like मतलब अच्छे levels पे. The third is Sattva or Sattvic. Sattvic are the ones, they are harmonized species, like they are very harmonized or they are very aligned within. तो जो जरूरत है हम वही करते हैं. मीन्स वी आर एंड मतलब दे आर वर्किंग फॉर द पीस ऑफ द लैंड. They are channel of peace and they are harmonized, they are aligned, and they do what is needed, and they are less in number, you know. They Okay. are the highest I in the got that. pyramid. They are highest in the pyramid. Okay, that's fine. And they are less in number. Okay, I understand that. Very good. Okay, so that is the understanding of Veena ji. Little bit corrections are required, but then yeah, fine tuning हम कर सकते हैं आगे. But then good attempt. Let's acknowledge Veena ji. Very good. That's a very good attempt. Yes. Anybody else who wants to build on what Veena ji has said? सबसे पहले तामसिक पे आते हैं. तमस मतलब क्या है? तमस means inertia, darkness, ignorance. So if somebody is living a life where he or she is not ignorant of the real nature of who I am. If I am ignorant of the real nature of who I am, then I am living in darkness. Yes. Then I am completely unaware of the truth and the reality of life. Yes. So
Tamasic people are those who are living in body consciousness. They are very close to the awareness of animals. उनमें अवेयरनेस है, पर इतनी ही है कि जिंदा रहना है. सर्वाइवल मोड बोला आपने, तो जिंदा रहना है. जिंदा रहने के लिए जानवर क्या करता है? खाना खाना है, खाना पीना, और फिर आप बोल सकते हो सिक्योरिटी, यानी कि सोना, खाना पीना सोना हो जाएगा. जैसे हमारे केस में रोटी कपड़ा मकान हो जाएगा. करेक्ट. तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, प्रोक्रिएशन, फैमिली को आगे बढ़ाना है, एंड सर्वाइवल इश्यूज, हाउ टू सर्वाइव, जिंदा रहना है. दैट्स ऑल. तो अवेयरनेस कहाँ पे है? मोर और लेस जस्ट लाइक एन एनिमल, नॉट बियॉन्ड दैट. अवेयरनेस है, लेकिन उतनी है जितनी बाकी स्पीशीज में है सर्वाइवल के लिए. नो क्वेश्चन ऑफ एनी सोल कॉन्शियसनेस, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ऐसा कोई थॉट भी नहीं आता है. एब्सोल्युटली डल माइंड, एब्सोल्युटली इन ignorance, that is tamas. Inertia, lazy. अगर शेर का पेट भर जाता है वो क्या करता है? गुफा में जाके 4 दिन सो जाता है. लेजीनेस, इनर्शिया. शिकार करेगा जब भूख लगेगी. एग्जैक्टली सेम. तो पीपल आर लिविंग एट दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस, दैट इज तमस. क्लियर है? सो नो रियल ग्रोथ ऑफ और इवोल्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, दैट इज तमस. Everybody okay with that? Lowest level of consciousness, you can say dull mind, inertia, laziness. These are the characteristics of tamas. Coming to rajas, action. यहाँ पे action oriented है, passion है, और अगर ego बहुत dominant है तो रजस को हम एक्चुअली 2 कैटेगरीज में डाल सकते हैं, रजस 1 एंड रजस 2. तो रजस 2 नीचे वाला कैटेगरी ले लेते हैं. These will be people who are highly driven about selfish ego. मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए. दुनिया गई भाड़ में. I don't care a damn about others. Even if I have to kill them, I will kill them. मैं चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, दूसरों का हक मार लूंगा, मेरे को सब चाहिए. सेल्फिश हूँ, ग्रीडी हूँ, पावर है, तो ये रजस 2 में आएगा. It will tend to go towards destructive tendencies. मार धाड़, वायलेंस, ग्रीड, सब कुछ होगा. लोभ मोह सब में रहेगा. तो विकार बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ही कैन गो टू एनी लेवल ऑफ एक्शंस टू possess, accumulate. तो सेल्फिशनेस और ग्रीड यहाँ बहुत ज़्यादा है. करेक्ट. एंड दैट विल लीड टू डिटीरियोरेशन, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल क्वालिटी जो है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, वो डिके होगी यहाँ पे. एंड रजस विल लीड टू तमस. The rajas quality will quickly fall into the tamas. Correct? Now these are the rajas 2 qualities leading to tamas. Rajas 1 quality क्या होंगी? Very emotional, very passionate, but then higher emotions. तो ये fear, anger, hatred, envy, इन सब से परे उठ के थोड़ा सा ऊपर आ गया. कौन सा आ गया इमोशन यहाँ पे? यहाँ पे पैशन है, लेकिन कौन सा इमोशन आ रहा है? यहाँ आएगा लव, कंपैशन, कंट्रीब्यूशन. करेक्ट. तो being a leader, motivating, inspiring people, leading a team, तो सबके साथ सक्सेसफुल होना है. So you are taking care of the others and then leading, so you can be in a very leadership position. You could be in a leadership position in an organization. You are successful people, जो बीना जी ने कहा, these are successful people who can move the team ahead, move ahead with the community. So they are powerful people. पावर एंड कंट्रोल है इनके हाथ में, और ये आगे लेके जाएंगे दुनिया को. दे वेरी पैशनेट एंड दे वेरी पावरफुल. पावर ड्रिवन पीपल, पावर एंड कंट्रोल है इनके हाथ में. तो दे आर द रजस 1. करेक्ट. तो ये रजस है. यस विजय जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? शशिधर जी, नहीं, बेसिकली यही कहना चाह रहा था कि रजस और तमस, बेसिकली जो 3 क्वालिटी बोली हैं, आप उसको 3 से 4 कर रहे हो. तो लेकिन वो रजस, तो रजस में बेसिकली वो इल थॉट नहीं रहेगा, मैं सोच रहा था. जहाँ वो इल थॉट या इल एक्शन आ जाएगा, वो तमस हो जाएगा. इट विल लीड टू तमस, क्योंकि रजस में इमोशन है.
रजस इज ऑल अबाउट इमोशन, Mhm. है ना। अब रजस में क्या है मैं आपको बताता हूँ। इट इज लाइक देवेंद्र, सुना है आपने इंद्रदेव, राइट? तो ही बिलीव्स इन व्हाट? प्लेजर्स, जॉय, एवरीथिंग। बट जैसे ही कोई तपस्या करने बैठता है, ही गेट्स स्केयर्ड। ये मेरी तपस्या से मेरा राजगद्दी छीन लेगा, तो ही इज वेरी सेल्फिश एंड ग्रीडी एंड वरीड, देन ही विल डू ऑल काइंड ऑफ स्टूपिड एक्शंस, करेक्ट? तो वो दोनों तरह के क्वालिटीज हैं उसमें, पर बेसिकली वेरी पैशनेट एंड वेरी हाईली इमोशन। रजस इज फुल ऑफ इमोशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लोअर इमोशंस विल टेक यू टू तमस, हायर इमोशंस विल टेक यू टू सत्वा. So that is the category of Rajas 1 and Rajas 2 which I have differentiated. But Rajas is volatile. वहाँ पे ठहरना बड़ा मुश्किल होता है. It will either lead to tamas or it will lead to sattva. But quality is there, karma is there. So you have to analyze that karma is whether it is tamasic or it is rajasic. And Rajas 1 will obviously lead you to the sattva quality, which is of love, peace, power, purity, divinity, happiness, bliss, wisdom, contribution. Clear है? Sattva is the highest quality of karma. What are the chances of staying only, I mean, of course, these three can be present in all kind of karmas. Then what is the chance of a person to be mostly into Rajas plus a little bit into Sattva? You have to first fix your home in tamas or in sattva. You can come down to Rajas and then enjoy it, and then go back to sattva. That is the best thing. If you are asking me, the ideal condition for a householder, for a गृहस्थ, हमारे जैसे गृहस्थ लोगों के लिए, आपका कर्मा की major quality will be in the sattva region. But occasionally or whenever you feel like, you are free to do that. As long as you have desires, you will come down, enjoy the Rajas. Parties करनी है, wedding function है, हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग पे जा रहे हो 2-3 दिन के लिए, तो फुल रजस में रहोगे आप, बिल्कुल रहो, कोई रोका नहीं है किसी ने, पार्टी करो, एंजॉय करो. बट देन once you come back, you are back to your satsang, sadhana, seva, satsang, and you are established in sattva. That is the real life for a good seeker, for a seeker like you. I'm relating to you there. So rajas is not bad. Only thing is you should have full, you can say, control on डिसिप्लिन एंड कंट्रोल होना चाहिए. रजस में कितना रहना है, कब रहना है. ये नहीं कि रजस में खो गए तो क्या होगा, सत्वा के हैबिट्स सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सब डिस्मेंटल हो जाएंगे. रजस 1 से रजस 2 में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे इंद्रदेव हैं. और रजस से एक बार तमस में आ गए तो फिर आप दुर्योधन को तो जानते ही हो. दुर्योधन और रावण जो हैं, दे आर परफेक्ट इन तमस, करेक्ट. तो रजस 2 से वापस तमस में आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. So you can easily fall from sattva to rajas to tamas. You have to be very, very careful about the quality of your karma. That is why we have to be aware. Awareness बहुत जरूरी है and choice of karma बहुत जरूरी है. So revenge और forgiveness में always go for forgiveness. But sometimes you have to protect yourself and then you will have to go for violence. So non-violence हमेशा जरूरी नहीं है. Violence होगा, that is okay. धर्म के पथ पे अगर आपको धर्म युद्ध लड़ना है तो लड़ो, not a problem. But that will be rajas. सत्वा में युद्ध नहीं होता, युद्ध होता है रजस में, और उसके बाद वापस आप सत्वा में जाओ. लाइक द पांडवास डिड, दे वर ऑन द पाथ ऑफ धर्म, दे हैड ए फाइट, देन दे वेंट बैक एंड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन सत्वा. क्लियर है ये, राइट? तो इज दैट क्लियर? द थ्री डिस्टिंक्शंस आर क्लियर. तो बीना जी, थोड़ा सा आपको फाइन ट्यून करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग को, एंड आई होप दिस एक्सप्लेनेशन वुड बी क्लियर. एनीबडी हु हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस और डाउट्स, प्लीज raise your hand and share so that we can have some clarity. This is very, very important. Yes, sattva, sattvic, rajasic and tamasic. Rajasic मैंने 2 पार्ट में इसलिए किया so that you are clear about one quality leading to sattva, one quality leading to tamas. Yes, Amanji, you wanted to share something? Go ahead. Just wanted to clarify. I think there is no angle to the financial situation or the wealth. There's no lens of wealth in any of these 3 categories. So any of the 3 categories people can be either rich or poor. I think what Veeraji was starting to say, that Rajasic is somebody, sorry, Tamasic is somebody who's poor. No, there's no connection of wealth with these 3 levels. Point taken. Very good. So it is not about the wealth, it is about the mindset. It is about the mindset, correct?
तो अगर कोई सेल्फिश और ग्रीडी है तो वो एक्यूमुलेट करता रहेगा, वेल्थ एक्यूमुलेट करता रहेगा, होर्डिंग करता रहेगा, जो भी चीज़ है उसको इनसिक्योरिटी है तो वो बचा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि बुरे समय में ये काम आएगा। तो यू आर एक्चुअली सेटिंग अप फॉर द बैड टाइम्स, right? So you are accumulating wealth for a bad time, and you keep accumulating wealth. What will happen? Bad time will come because you are calling it. So you need to understand that. So ये mindset है, but tamasic quality will be of karma could be tamasic, could be rajasic, or could be sattvic. I think it is. अमित जी क्या बोल रहे हैं? Instead I would say soul set. Soul set क्या हुआ? अमित जी? No, what Veena wrote, mindset, but actually mind is different and soul is different. So I think mindset is still not the most appropriate uh, term here. I think it is the level of consciousness to operate in this human machine. तो जस्ट बी अवेयर ऑफ इट कर्मा। अभी हम उस लेवल पे, सोल के कॉन्शियसनेस के लेवल पे नहीं जाएंगे, कर्मा के कॉन्शियसनेस पे जाना है कि कौन से कर्मा हम कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ कर्मा पे हम जा रहे हैं, विच कैन बी डन थ्रू, बिकॉज दिस इज क्वालिटी ऑफ माइंड बाय द वे। हाँ, ये सोल की क्वालिटी नहीं है, ये तमस रजस और सत्वा इज क्वालिटी ऑफ माइंड, बिकॉज कर्मा इज कमिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ माइंड। सोल तो फ्री है, सोल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सोल इज ए विटनेस, सोल इज ए विटनेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। Leslie is agreeing with full vehemently. He is agreeing that soul doesn't do anything. Soul is a sakshi. Yes, we know that soul is a sakshi. But then, in the body, when the soul is embodied in this body and mind, soul will do karma, and that awareness has to be there. Which kind of karma are we doing? Because in the matrix, there is no other way you can survive. You will act through this karma only. Correct? At the soul level, by the way, चलो सोल लेवल की बात कर ही ली है तो बता देता हूँ। सोल लेवल पे देयर इज नो कर्मा, सोल इज एब्सोल्युटली फ्री। अब आप बोलोगे अगर मैं फ्री हूं तो ये कर्म कर कौन रहा है? इट इज द इल्यूजन दैट आई एम इन बॉन्डेज। देयर इज एन इल्यूजन दैट आई एम इन बॉन्डेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट इल्यूजन आई एम स्टक इन दिस मैट्रिक्स। आई कांट ब्रेक अवे। मैट्रिक्स मूवी कितने लोगों ने देखी है? तो जब तक न्यू अवेकन नहीं होता, ही इज व्हाट? He is what? He is a machine, right? He is a machine means he is operating through everybody who is sleeping is actually a machine operating through this tamas, rajas, and sattva. The moment you are awakened, then you can break away from the matrix. Then you are free from karma. Then you become the neo, then awakened one, then enlightened one, the Buddha, and then you are free from all the gunas. तब सारे गुणों से फ्री हो गए, तब आप जीवन मुक्ता बन गए। पर वो दूर की बात है। ठीक है, तो सोल लेवल पे वी आर ऑल फ्री, बट वी डोंट रियलाइज इट। Why? Because in this matrix, we are operating through the mind. And through the mind, there are only three categories: tamas, rajas, and sattva. Clear? Everybody? Any questions? And I hope, Veena ji, since you had started that sharing, so I hope it is given you some more clarity. No, definitely this was very, very useful. I just want to add one more thing separately. So actually, I've been practicing Buddhism for a very long time, and and which is following, Buddha and his stories. And then I picked up Gita one day. My daughter wanted to read, so I read with her, and then I read this the three things. ये जो तीन आपने बताया. That brought me so much of clarity. I'm just discussing because in Buddhism we say that I am a bodhisattva. हम लोग बोलते हैं कि हम बोधिसत्व हैं. When I practice this, and then I read this part in Gita, और उसमें ये लिखा था जब तमस, राजस और सत्व, तो मेरे को एकदम से बहुत क्लैरिटी आ गई. नहीं तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन रहता था. एकदम क्लैरिटी आ गई. Perfect. Because this is सत्व important. is बोधिसत्व. Because what is really important for us is मेरा अगला action कौन से quality का है, I should be aware. That's why I touched this topic first. Correct? There are other categories of karma, of classification of karma and all that I said we will come later. Maybe we can also extend that to the next week also. But the basic idea is that this is very, very important because all your karma, चाहे आपकी साधना हो वो भी इन तीन कैटेगरीज में, आपका खाना हो वो भी इन तीन कैटेगरीज में है, आपका लाइफस्टाइल that is also in these three categories. So these three categories are very, very important to understand.
because this is every walk of life we are walking through these three qualities in this life form. So it's the most important part of our life. Correct? Thank you, Veena ji, for sharing that. Let's acknowledge Veena ji and everybody who shared. Amit ji, Leslie, and everybody. Yeah, good. Right. And since you talked of Bhagavad Gita, let me also give you a quote. Quote of Bhagavad Gita for law of karma. Who wants to share that? Let's see how many of you remember that. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्तव कर्मणि. Who can explain this? सबसे कॉमन है ये, लॉ ऑफ कर्मा को एक्सप्लेन करता है. Anybody who wants to try? विजय जी, सिमी जी, तरुण जी, विवेक सॉरी जी. लाइट चली गई थी, आई मिस्ड इट, आई विल सी द रिकॉर्डिंग. Pardon? इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, सो आई लॉस्ट. I understand that. That's fine. No problem, sir. So we have completed that discussion on tamas, rajas, and sattva. Now we are moving on to the law of karma as explained in Bhagavad Gita by Lord Krishna. So the famous quote, famous shloka, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. What does it mean? अपने कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो. I think so. Okay. अपने Not कर्म sure. किए जाओ, फल की इच्छा मत करो. Okay. Actually what it says is, इंसान का अधिकार सिर्फ उसके कर्म पे है, उसके कर्म फल पे उसका अधिकार है ही नहीं. Oh, okay. So continue to do your karma, only being aware of the qualities of the karma, which we just discussed. Correct? इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म में है, कर्म फल में नहीं है. इसलिए कर्मों पे फोकस करो एंड कर्म फल के तरफ बिल्कुल भी कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है. फिर उसके आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कर्म फल के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि कर्म ही नहीं करना है, क्योंकि कर्म ना करना भी एक कर्म है. So you should always be doing your duty. You should always be doing what is right for you intrinsically. अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो. तो ऐसे गृहस्थ, वो तो अर्जुन को सिखा रहे थे, लेकिन ऐसे गृहस्थ हमारा क्या काम है? अपने पति धर्म का पालन करो, अपने पुत्र धर्म का पालन करो, अपने पिता धर्म का पालन करो, अपने मनुष्य जीवन का जो धर्म है आपका वो पालन करो. अपने पर्पस ऑफ लाइफ को फुलफिल करने के लिए जो कर्म करने हैं, जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वो करो. और वो करते करते उसके रिजल्ट्स पे बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रखनी है. और कर्म ना करना है ये भी बिल्कुल गलत है, इसको भी छोड़ो. That is the real explanation of this shloka. So anybody who wants to have a discussion on this for your understanding? So 50% I was right. Yeah, you're right, absolutely right. इसीलिए तो फाइन ट्यून कर रहे हैं ना. This session is only to fine tune. Most of us know what is karma. We are only going to fine tune what we are understood. Yes. Anything else? So that is clear. What is karma? So we have seen the three qualities of karma. We have seen what is karma. And we also know how to perform our karma, right? Now let us look into the quality or rather categories of karma. तो आप लोगों ने सुना होगा संचित कर्म. कितने लोगों ने सुना है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म? No idea. No idea. So okay, we will look into that. So first category is called the sanchit karma. Sanchit karma is what? All the actions that you have done. Actions means karma. When I am saying karma, I mean actions. मैं बोल भी दूंगा तो thought, words and actions की बात करें, ठीक है ना? तो और जितने भी कर्म आपने किए हैं अभी तक, जितने भी लाइफ टाइम्स में, अभी तक जितने आपके लाइफ टाइम्स हुए हैं, उसके जितने भी कर्म आपने किए हुए हैं, थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन, उसमें से जो भी पेंडिंग रिजल्टेंट है वो संचित कर्म. करेक्ट? तो पिछले जन्म के हो गए, इस जन्म के हो गए, राइट, अभी तक के हो गए, आज सुबह के भी हो गए, आज शाम के 1 घंटे पहले के भी जो कर्म हो गए, वो सारे कर्म जो हैं उनका जो अभी तक
पेंडिंग हैं, यानी कि जो अभी तक रिजल्ट आए नहीं है आपकी लाइफ में, आने हैं ना। कर्मा का मतलब ये क्या है, वॉट एवर यू सेंड इट विल कम बैक टू यू। तो जो वापस नहीं आए हैं, जो अभी तक पेंडिंग है, वो संचित कर्म। संचित कर्म इज द टोटल accumulation of all the karmas that you have done in all the past lives and present life combined. Correct? Now, out of that is subset of that, यानी कि उसमें से कुछ चीजें आपको present life situations में आएंगी, जो आपके present life में आ चुकी हैं काफी, आपके बचपन में, आपके टीनेज में, आपके यूथ में, और अभी आपके लाइफ में जो भी करंट सिचुएशंस बन के आ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो जो लाइफ सिचुएशन अभी आपकी आ गई है, वो प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध इज व्हाट, your karma on the return journey is prarabdha. Correct? So thought, words and actions which I generate and I radiate to the outside world, that is my karma. And when it comes back to me in the form of life situations, life situations मतलब क्या, बाहर की दुनिया में क्या होता है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। तो people, situations, whatever is coming back to me in this lifetime to me, that is my prarabdha. Once it has come, I have no choice, I have to accept it, because it is my karma on the return journey. उसमें ये नहीं पूछना ये ऐसा क्यों, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरी जॉब क्यों चली गई, मेरे को इतना घटिया पड़ोसी क्यों मिला, मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मानते। सब प्रारब्ध है। आपने किस पेरेंट्स के यहाँ जन्म लिया, प्रारब्ध है। आपके भाई बहन कैसे मिले आपको, प्रारब्ध है। आपके हस्बैंड और आपके बच्चे कैसे हैं, प्रारब्ध है। आपके पड़ोसी कैसे हैं, आपका बॉस कैसा है, आपने इसी को कंपनी में क्यों काम किया, सब प्रारब्ध है। Life situations coming to you, face it, take it or take it. There is no other way. Life comes to you point blank. Life comes to you point blank. Take it. Now you can't say, why are you shooting at me? Life is like that. Take it. That is prarabdha. But now in the face of it, prarabdha, whatever you do in the present time, अभी एक्सीडेंट हो गया, आपके टांग में चोट लगी, अभी आप क्या करोगे, अभी आप गाली गलौज करोगे, रोना धोना जोगे, भगवान को कोसोगे, या फिर भगवान को धन्यवाद दोगे, ओके टांग में चोट लगी है, टांग कटी नहीं है, जान बच गई, धन्यवाद। दिस इज योर क्रियामान कर्मा और योर पुरुषार्थ। व्हाट आर यू गोइंग टू डू राइट नाउ, दैट इज योर पुरुषार्थ। प्रारब्ध के फेस में, इन द फेस ऑफ वट एवर इज द लाइफ सिचुएशन, द क्वालिटी ऑफ योर कर्मा राइट नाउ, व्हाट यू चूज टू डू, दैट इज योर क्रियामान कर्मा और योर पुरुषार्थ। And the resultant of that will come immediately or maybe coming later, which will be added to your sanchit karma. So that completes the 3 categories of karma. Clear hai? So I'll repeat that. Sanchit karma, accumulation of all the past karmas. Prarabdha karma, the present life situations which are a subset of the sanchit karma. And in that phase of these situations, whatever karma you are doing right now, that is your purusharth. So your purusharth is your free will, your purusharth is your choice, and accordingly your destiny is created. So life is not what is happening to you, life is what you do in the face of what is happening to you. That creates your destiny, that creates your complete experience. So your present life is always what, your experience of life is always what, past karma plus present karma is equal to destiny. आपकी डेस्टिनी कैसी होती है, पास्ट कर्मा का भी इफेक्ट है, प्रेजेंट कर्मा का भी इफेक्ट है, और उसका टोटल इम्पैक्ट जो होगा, दैट क्रिएट्स योर एक्सपीरियंस ऑफ राइट नाउ डेस्टिनी। तो भाग्य क्या है, कर्म फल है। दिस इज द कैटेगरी ऑफ कर्मा। एनीबडी हु हैज एनी डाउट? यस, लेस्ली, गो अहेड। Isn't destiny based on just your response on your prarabdha? Because आपने जब प्रारब्ध इज द लाइफ समझाया, सिचुएशन, पुरुषार्थ इज योर चॉइस। हाँ प्रारब्ध आपका एग्जैक्टली, चॉइस नहीं है। वही तो कह रहा हूँ कि आपने डेस्टिनी बोला तो आपने बोला कि प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ, आई मीन योर चॉइस, ये दोनों आपके फ्यूचर बनाते हैं, फ्यूचर में राइट? लाइफ का एक्सपीरियंस बनाते हैं। सी सिंपल,
पास्ट लाइफ के हिसाब से, पास्ट कर्मा के हिसाब से मेरा आज एक्सीडेंट हुआ, ठीक है जी। तो मैं सड़क और क्रॉस कर रहा था, गाड़ी आके टक्कर मारी, मेरी टांग में चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, करेक्ट। नाउ दैट इज एन इंसिडेंट, हाउ प्रारब्ध हैज कम इनटू माय लाइफ। नाउ my purusharth is what am I going to experience after that accident? That is my purusharth, and that gives you the complete life experience. Accident हुआ और मैं कोसने लग गया, उसको ड्राइवर को कोसने लग गया, भगवान को कोसने लग गया, सबको कोसने लग गया। नाउ आई एम क्रिएटिंग ए नेगेटिव कर्मा फॉर माई सेल्फ। तो माई एक्सपीरियंस इज व्हाट सफरिंग एंड मिजरी। ये है मेरे एक्सपीरियंस लाइफ का, करेक्ट। बट इफ माई पुरुषार्थ इज आई एम ग्रेटफुल टू डिवाइन, थैंक गॉड नथिंग सीरियस हैज हैपेंड, एक हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, दैट इज परफेक्ट। So I'm grateful to divine for having saved my life. My life is saved. Thank you very much. I am grateful. This is a different quality of karma, right? This is sattvic karma. So my experience of life is what? Experience of life is different. Incident same है। तो कोई बीमार होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, वो अगर रोने धोने लग गया तो उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। अगर वो ग्रेटफुल है तो उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। तो लाइफ एक्सपीरियंस इज ऑलवेज पास्ट कर्मा प्लस प्रेजेंट कर्मा, प्रारब्ध के साथ पुरुषार्थ। दैट गिव्स यू द राइट experience of life. Is that okay, Leslie? फिर से बोल रहा हूँ, अभी experience of my life is only my response to whatever I'm experiencing. Yes. Right? Yes. तो मेरा जो स्टोर हाउस है और मेरा जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जो प्रारब्ध घट रहा है, इन दोनों में तो मेरी कोई चॉइस ही नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन डन। करेक्ट। बट उन चीजों को कंटिन्यूसली मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ या रिएक्ट कर रहा हूँ, वो उस पे मेरा पूरा कंट्रोल है। एब्सोल्युटली, दैट इज योर चॉइस। तो वहीं पे फ्री विल है। मेरा एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है। हाँ बिल्कुल है, सही है। हाँ, और यही कह रहा हूँ, आप प्रारब्ध और पुरुषार्थ को दोनों को मिला के कह रहे हो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ सिर्फ मेरा रिस्पॉन्स और रिएक्शन मेरा एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है। बट इट इज इन फेस ऑफ ए सिचुएशन ना। पड़ोसी झगड़ा करने आ रहा है, आप रिस्पॉन्ड क्या करोगे? तो पड़ोसी हाँ, झगड़ा करने बिल्कुल। आ रहा है, ट्रक ने एक्सीडेंट मारा, ये सब प्रारब्ध है। बिल्कुल सही, उसमें मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है, बट उसके रिस्पॉन्स में ही, उसी के सिचुएशन के आगे ही तो आप रिस्पॉन्ड करोगे। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि वही तो मेरा एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है। हो इसीलिए भी फ्री रहा विल है। वहीं पे है, फ्री विल हाँ, वहीं पे है, चॉइस वहीं है। संचित कर्म में कोई चॉइस नहीं है, प्रारब्ध में कोई चॉइस नहीं है, आपके पुरुषार्थ में ही आपकी चॉइस है, एंड दैट डिफाइंस योर लाइफ। एंड दैट आल्सो क्रिएट्स माय एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। ओके, एब्सोल्युटली। ओके, एब्सोल्युटली परम, बात वही है। राइट, सो व्हेन द सिचुएशन इज गुड, इट इज इजी टू बी पॉजिटिव। व्हेन द सिचुएशन इज बैड, then it takes a lot of self discipline and control to be positive, and that is where your purusharth comes in. Right? Very good, Leslie. Let's acknowledge Leslie that would have opened up clarity, given clarity to all the people. So this is what is the discussion of karma. Anything else that you want to touch on karma, you are free to ask any question. मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? कितने लोगों को ये क्वेश्चन है, वाई मी? कभी बुरा होता है कुछ तो हम पूछते हैं वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बाकी सब कितने खुश हैं। जो लोग बुरा कर्म करते हैं बड़े खुश होते हैं, मैं अच्छा कर्म करता हूँ फिर भी मैं मरता रहता हूँ। ये सब क्वेश्चंस हैं आपके, तो पुट दैट इन द डस्टबिन। यू डोंट अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कर्मा देन। वो अभी अच्छा एक्सपीरियंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके संचित कर्म अच्छे हैं, उन्होंने पास कर्म अच्छे किए हैं, इसलिए उनके पास अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और जब वो खत्म हो जाएगा अच्छे कर्म, तो उनको भी बुरे कर्म आ जाएंगे। तो एक्सीडेंट, इंजरी, डिजीज, प्रमोशन, लाइफ पार्टनर का आना जाना, whatever is happening in the outside world, accept it the way it is, because nothing is going to be permanent. Everything is temporary. Everything is changing. बाहर की दुनिया हमेशा चेंज होती है, वो आपके कर्मों के मुताबिक आपका प्रारब्ध बनता रहेगा। आने दो। Just tell God, I am ready for your blessings. Give me whatever you want to give. I'm okay. That is the right way to live life. जिसको आने आने दो। I'm ready for it. Correct? Yes, but one thing that most people ask is, if you are on a spiritual journey, a seeker on the spiritual journey, can he do something about the sanchit karma?
Can you do something about the prarabdha? Prarabdha is already happened in your life. You can't do anything about it. But yes, you can definitely do something about your संचित कर्म. आपकी साधना से, आपकी सेवा से, आपके सत्संग से आप उस संचित कर्म को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं with your very strong perfect spiritual sadhana. When you are doing something like vipassana, you are doing something like pranayam, meditation, what are you doing? The fire of the divine love, if you are into bhakti yoga, or the fire of divine wisdom can burn away the impurities in the chit. Because all these संचित कर्म कहाँ पे है? ये आपके चित्त में. आपके अंदर विकार बन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब आपके इम्प्रिंट्स हैं आपके चित्त में. जितने भी कर्म आपने किए हुए हैं, एक तो बाहर की दुनिया में हुआ है और उसके इम्प्रिंट्स आपके चित्त में हैं. यस और नो? बाहर के कर्म तो आएंगे ही आएंगे वापस. बीमारी बन के, एक्सीडेंट बन के, ट्रक बन के, एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा, बाहर की दुनिया में आएगा. ब्रेक थ्रू, ब्रेक डाउन, ये सब आएंगे. बाहर की दुनिया को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. यस और नो? तो आप अपने कार्मिक इम्प्रिंट्स को, जो संचित कर्म हैं आपके, जो कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं, उनको अपनी साधना से, स्पिरिचुअल हीलिंग से, स्पिरिचुअल एनएलपी टेक्निक से, प्राणायाम से, योग से, मेडिटेशन से, भक्ति योग से, राजयोग से, जो भी आपकी साधना है उसको आप स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करोगे, संचित कर्म को आप जला के इम्प्रिंट्स को जला सकते हो. तो यू विल बी फ्री फ्रॉम योर संचित कर्म बिफोर इट कम्स टू यू एज ए प्रारब्ध. दैट इज व्हाट यू कैन डू. That is why when we talk of self-actualized Jivan Mukta has burnt away all the imprints in his चित्त. तो अंदर के चित्त में वो अब किसी को कोई इम्प्रिंट बनाने नहीं देते बाहर की दुनिया से. जीवन मुक्ता इज फ्री फ्रॉम ऑल द इम्प्रिंट्स. नाउ व्हाट हैपेंड? बाहर के सिर्फ अकाउंट्स करने बाकी हैं. तो कार्मिक अकाउंट्स को पूरा करने के लिए वो दुनिया में रहेंगे. शायद 1-2 लाइफ टाइम और लगे पूरे अकाउंट्स पूरे क्लियर करने में, लेकिन अंदर की दुनिया में उनके इम्प्रिंट्स ना के बराबर हो जाते हैं. So that gives you a lot of freedom. He is free from all the bondages. He is free. That is why we say Jivan Mukta is free. He is free from all the karmic imprints. He is free from all the karmic bondages and attachments. But बाहर के अकाउंट्स को सेटल करने के लिए थोड़ा सा टाइम और रहना पड़ेगा. थोड़ा सा टाइम मीन्स could be a few years, could be a few lifetimes. और जब वो अकाउंट पूरा हो जाता है, then he is completely free from the and is completely liberated. So your spiritual sadhana, that is why it is so important, because it can free you from your karma of your past lives, sanchit karma. Yes. So I hope I made the point clear. Yes, Leslie, you wanted to share something? Go ahead. No, I didn't want to share, but I just wanted to be more clear. आपने कहा मेरा संचित, हमारा संचित चित्त में है. Okay, so then we do our practices. तो उससे we can burn our संचित. तो हमारा प्रारब्ध कहाँ stored है? प्रारब्ध उसी का सबसेट है जो आ चुका है. आ चुका है means जो आ रहा है every day whatever is happening. You can't burn off everything, no? Right. तो प्रारब्ध मेरा stored कहाँ है तो यहीं पे. Where it will get stored. अब कोई बोलेगा आकाशिक उसमें है, आकाशिक पन्नों में है. It is all in your चित्त, in your subconscious mind, nothing else. Nowhere else. Where will it be? Tell me. It has to be in your subconscious mind. तो मेरी अगर प्रैक्टिसेस संचित को बर्न कर सकती है, तो मेरे क्या प्रारब्ध तो नहीं बर्न कर सकती? प्रारब्ध तो सिचुएशंस है ना बाहर की. आपने किसी को अगर थप्पड़ मारा है तो वो थप्पड़ मारने वापस आएगा ना. बाहर के अकाउंट्स तो पूरे करने ही पड़ेंगे ना आपको. आपने अपने अंदर के एंगर को खत्म कर दिया. सी, लेट मी गिव यू एग्जांपल. मेरा मिस्टर एक्स के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है जी. गाली गलौज की, उसने भी गाली गलौज की, उसने थप्पड़ मारा, मैंने भी थप्पड़ मारा. व्हाटएवर हैज हैपेंड, देन वी पार्टेड अवे. अच्छा, ओके, ठीक है. देन वी पार्टेड अवे. करेक्ट. अब वो अकाउंट में क्या लिखा है? वायलेंस है. नहीं, एक मिनट, मैं आप और मैं डिस्कनेक्ट हो गए थे. व्हेन आई सेड समथिंग फिर डिस्कनेक्ट हो गए. ओके, मैं ये बोल रहा हूं, मैं सुन ही नहीं पाया. मैं ये बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मैं और मिस्टर एक्स कोई हैं. ओके, हमारी लड़ाई हो गई है. तो किसी बात पे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुई, मारधाड़ हुई, थप्पड़ वप्पड़ मारा एक दूसरे को. उसके बाद हम दोनों अलग हो गए लाइफ से.
अब हमारे बीच का कार्मिक अकाउंट में क्या है? एंगर लड़ाई। है, हॉस्टिलिटी है, वायलेंस है, इल फीलिंग है, सब कुछ है। ये हम दोनों का सोल का कनेक्शन का ये है। अब मेरे अंदर क्या है? मेरे इम्प्रिंट मेरे अंदर भी आ गए, गुस्सा है, वायलेंस है, इल फीलिंग है, सब कुछ है, वो मैंने हटा लिया। करेक्ट। अब जब मैं अगली बार उनसे मिलूंगा, अगर उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किए अपने अंदर, तो वो अपने एंगर और वायलेंस के साथ आएंगे मेरे पास और मुझे मारने के लिए आएंगे, वैसे ही आएंगे जैसे पहले गए थे। करेक्ट। बट नाउ since my imprints are not there, I can handle that in a different way and cool off that with love, peace and joy. करेक्ट। पर वो आएगा वापस। मेरे इम्प्रिंट्स खत्म हो गए हैं, लेकिन वो अकाउंट पूरा क्लोज करने के लिए वो आएगा। हो सकता है वो थप्पड़ मार भी देगा, but then situation will be handled and then I will be able to forgive him, whatever that equation will be closed. वो इक्वेशन क्लोज होने के बाद ही मैं फ्री होऊंगा। तब तक मेरे को इसी शरीर में या आगे चल के जब तक अकाउंट क्लोज नहीं होते, I will be in this life forms. That is Okay, what I so mean to say. so my actions which created the ripples in the external, the Yes. energies that went through, वो rebound करके जो मेरे पास आ रही है, that is my prarabdha. Okay, got it. ठीक है ना? बट वो अब- सारे इम्प्रिंट्स आपके अंदर ही हैं। आप अपने अंदर चित्त को साफ कर लेंगे तो बाहर अपने आप क्लियर होगा, क्योंकि चित्त को साफ करते करते मैंने उनको बहुत लव, पीस एंड जॉय की एनर्जी भेजी होगी जिससे लड़ाई हुई थी, है ना? तभी तो मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो मैंने उनको माफ कर दिया है। जब वो आएंगे मारने के लिए, तो मैं हंस के अगर उनका स्वागत करूंगा, उनको जो भी माफी मांगनी है, फॉरगिवनेस की, जो भी एक्शन लूंगा, आके बैठ के फिर हम चाय वाय भी पी सकते हैं, पकौड़े भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट इट विल बी फाइन। गेट माय पॉइंट? बट दैट अकाउंट हैज टू क्लोज। दैट इज प्रारब्ध। बट चित्त में से अपने आप चित्त को साफ करना, वो मेरी साधना से हो जाएगा। इसीलिए इनर वर्ल्ड से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है और आउटर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होती है। क्लियर? वेरी गुड लेस्ली। लेट्स एक्नॉलेज लेस्ली जी। वेरी गुड। एंड आई होप इट हैज given clarity to most people, and these are the intricacies of law of karma. Yes. Okay, so it is scheduled time now, so I will close the session. Let us take some feedback. So what are you taking away from the session? परवीन जी, आपने कुछ नहीं बोला, क्या लेके जा रहे हैं? It's been a revision again, which I have not touched on in a long time. So thank you. Okay, very good. Thank you. Welcome. Yes, Vijay ji, anything? What are you taking away? Thank you for the session, Shashi Dhar ji. It's nice to keep reflecting. Okay, very good. And I've been seeing your comments on the YouTube. So you are very regular. आप watch भी करते हैं and comments भी डालते हैं. So I know. So good that you do that. Also share the recordings not only with you, with people in your life. Somebody might wake up, get awakened, and maybe transform his journey. And my sincere request to all of you: spread the light. Spread the light. It will help you transform your life more powerfully. If the people in your life are transformed, you will have a very, very powerful life. Correct? So invite them to the Wednesday session. If nothing else, this is a very simple thing you can do. Share the recordings with people. And if they want to join, let them join the Wednesday session. When you spread the light, you contribute to people. Correct? Yes, let's have more people share. Veena ji, क्या लेके जा रहे हैं? Veena ji, या Tarun नहीं, ji, आपके कॉल्स काफी अच्छे रहते हैं। आई लाइक दिस कॉल्स एंड मतलब जो हिंदी के भी शब्द आपने जैसे ये सब बताए कर्मा के, तो वो मुझे नहीं पता थे। बाकी ये तो मैंने काफी प्रैक्टिसेस किए, तो मुझे काफी फ्रीडम फील होता है। very good. Whatever you said is right, no doubt about it. Perfect. Very Thank good. you. Yeah. Welcome. So be in the sessions and you will get more insights and more clarity. Very good. Anivedita ji has given that as a text. Tarun ji, Vivek ji, Jyoti ji, anything you want to share? And Anirudh ji, okay, long time. Anything you want to share? What you have got from the session? What are your takings? What are your takeaway? Anybody? Tarun ji? More Yes. clarity on Yes, sir, it has been. Yeah. Okay. So revision and clarity for you. Okay, very good. Yes, Vivek ji.
Yeah, usually more like विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं शायद, अगर कुछ बोलना Yeah, चाह रहे हैं तो। yeah. Am I audible now? तरुण जी Hello? बोल रहे हैं, विवेक जी बोल रहे हैं? हेलो, विवेक हाँ बोल रहा हूँ। यस विवेक, हाँ बोलिए, आप म्यूट पे थे पहले। हाँ हाँ जी। जी, मोर क्लैरिटी एंड जो और ओके, आपके नेट थोड़ा सा वीक है, क्लियरिटी नहीं आ रही है, बट समझ गए। तो आपको क्लैरिटी मिल गई है, थोड़ी रिकैप हो गया है, दैट्स ओके, परफेक्ट। ओके ज्योति जी कुछ बोलना चाहेंगे, और अनिरुद्ध जी कुछ कहना चाहेंगे? Not today. ओके दैट्स फाइन। अनिरुद्ध जी एनीथिंग फॉर यू? I didn't see when you joined, but in case you want to share something, please go ahead. सर ठीक है, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। Okay, that's fine. So you can watch the recording later, and in case anybody wants to have any kind of discussion or clarity, feel free to talk to me, and the recording will be posted by tomorrow in the group. And anybody who is not there in the group, ऐसा कोई है, so you should get in touch with me or get in touch with your host. We will be able to add you in the group, and you will find the recordings in the group, right? Okay, so with this, we come to the end of the session. I hope this session was valuable for all of you and you got the necessary insights. So watch the recording again and keep attending the Wednesday sessions and invite people in your life until we meet next Wednesday with the fourth law, which is the law of least effort. We will do that first. And till then, Aham Brahmasmi. Enjoy, take care, good night. Thank you, sir. Good night. Thank you, bye-bye.